हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे राजी नरसिम्हन के बारे में पढ़ेंगे। हम उनकी लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी है अ टोस्ट टू हरसेल्फ, उसके बारे में भी पढ़ेंगे और साथ में हम लोग हाँ यही डिस्कशन होगा इस वीडियो में ना। ये जो है ये MEG7 है, ब्लॉक नंबर 6 है, शॉर्ट स्टोरी है, यूनिट नंबर 4 है ये। राजी नरसिम्हन वॉज बॉर्न इन मद्रास, तमिलनाडु in 1930. After her graduation, she worked as a reporter and feature writer for the Indian Express. She left her job in the early 70s to take up full-time creative writing. In addition, she has been regularly reviewing books and writing critical articles for the Hindustan Times and Indian literature. Her publications include 4 novels: The Heart of Standing Is You, You Cannot Fly, Forever Free, Drifting Toward Dawn, and The Sky Changes, The Marriage of Bela and Other Stories is a collection of her short stories. Her book of criticism, Sensibility Under Stress, Aspects of Indo-English Fiction, is recommended reading in the English Literature Department of some universities in India. Her first story, The Poor Folk Around Town, was published in Quest in 1969. A Toast to Herself, जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं अभी, was first published in Indian Literature in 1986. Her other interests are dance and theatre. For a long time, she was a dance and theatre critic for the Patriot. ठीक है. A Toast to Herself जो है, some issues हम इसमें पढ़ेंगे. This story is about a writer. Priya's first book has just been published. Just wait. She is expecting a review of it in the papers. Joshi of the Herald has told her he will be publishing it soon. तो पहले मैं आपको एक बार स्टोरी बता देती हूँ. प्रिया जो है, एक जो करेक्टर है इसमें, प्रोटैगनिस्ट है, वो लिखती है, उसको राइटिंग का बहुत शौक़ है, लेकिन उसकी राइटिंग से उसको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है. उसकी मदर उसको समझाती है कि तुम्हें राइटिंग से इतना पैसा नहीं मिलने वाला, तुम्हारा जो घर ना वो चलेगा नहीं. और प्रिया जो है वो डाइवोर्सी है. डॉक्टर केसवन करके एक आदमी है जो कि वो शायद नहीं चाहता है, लेकिन प्रिया चाहती है कि वो उससे शादी कर ले, है ना, पर ऐसा वो कभी उसको प्रपोज़ करता नहीं है. तो जो प्रिया की जो घर है ना, वो चलता है माँ की बुढ़ापा पेंशन से, जो कि नहीं, विडोज़ पेंशन से उसका गुजारा चलता है. तो इस तरह की ये स्टोरी है. और इसमें ना प्रॉपरली ये बताया गया है कि जो राइटर होते हैं ना, राइटर्स होते हैं ना इंडिया में, वो कितना पैसा कमा सकते हैं आर्टिकल्स लिख के. तो बहुत मुश्किल है कि उनका गुजारा चलना. तो अभी इसमें एक और बात बताई गई है कि उसकी जो बुक है वो अभी पब्लिश होने वाली है, रिव्यूज़ आने वाले हैं. तो वो एंग्जाइटी है उसको बहुत ज़्यादा कि कैसे रिव्यूज़ आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा. तो ये एक एक कंडीशन बताई गई है एक औरत की जो कि डाइवोर्सी है और लिखती है, लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता है इतना, वो जॉबलेस है. इस तरह की कंडीशन एक लेडी की इसमें बताई गई है. चलो, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग नाउ, है ना. This story is about a writer. Priya's 5th book has just been published. She is expecting a review of it in the papers. जोशी ऑफ द हेराल्ड कोई हैं जिन्होंने बोला था कि उनकी जो प्रिया की जो बुक है उसको वो पब्लिश करेंगे. जोशी ऑफ हेराल्ड हैज़ टोल्ड हर he will be publishing it soon. She's nervous. What if the review is bad? The fear is close and biting like a mask. One might argue that it should not matter to a committed writer like her. What is a review? Just words. Will you stop writing if this review doesn't appear? अपने आप से वो क्वेश्चन पूछ रही है. ठीक है. Every writer wants to be read and recognized. The reading public and reviewer may not at times be aware of what their responses and reactions may mean to the writer. Stepping away from the full set of her books, Priya sees them huddled like children, separated from their mother. मतलब अपने बच्चों की तरह वो उनको बुक्स को देख रही है.
Wrapped in their jackets, they do seem like her physical offsprings, sprung from the clay and kiln of her body. She celebrates the publication of a book as one celebrates the birth of a child. Drinking a toast means wishing happiness and success to somebody or something while raising a glass of wine. Here Priya wishes herself success and happiness, drinking lemonade in the company of a mother and Dr. Kesavan under the navy blue sky. कैन वन अर्न वंस लाइवलीहुड बाय राइटिंग इन इंडिया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, है ना. द आंसर इज नो, especially if it is not popular reading. Her writing brings Priya pebbles. Her mother tries very hard to make Priya realize that writing is for those with money. For people like Priya, it should only be a hobby. But Priya refuses to understand the hard realities of life. 200, 250 is the most she gets for an item, a story or an article. If she does 4 items a month, writing all the time, she must be making 1,000 rupees. Priya knows a taxi driver makes more, but she doesn't seem to mind. She wants little. Her wants have shrunk suddenly ever since she went into writing. Her books are more precious than any money she may get. Writing alone can sustain her now. That is why and how many writers continue to write and live in poverty. Writing becomes an end in itself. It becomes the be all and end all of one's life. मीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो इस जो पैराग्राफ है ना, उसमें सिर्फ राइटिंग के बारे में बताया गया है, राइटर के बारे में बताया गया है कि उनकी कंडीशन कितनी बुरी हो जाती है. उनको पैसा नहीं मिलता है इतना, तो इससे ज़्यादा तो ड्राइवर कमा लेता है, टैक्सी ड्राइवर. वो कैसे अपने आप को सस्टेन करेगी. राइटर जो है ना वो पॉवर्टी में रहते हैं ऑलमोस्ट, है ना. इकोनॉमिक्स हाउएवर प्लेज अ बिग रोल इन अवर लाइफ टुडे. Priya's mother keeps standing pressed to the gate looking out for the postman to bring her widow's pension for the month. It is not due yet. मदर भी जो है पेंशन की वेट कर रही है, जो अभी आने वाली नहीं है, ड्यू नहीं है. The month is not over yet, but she will stand there glued to the gate, forgetting to eat. Perhaps this money is her only safety. Okay. Obviously, somewhere in the recesses of her heart, Priya is conscious of how little she has by way of worldly possessions and what it may mean in a moment of crisis. मतलब प्रिया को पता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है. क्राइसिस के टाइम पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. Mother daughter relationship and the generation gap have also been stressed. Priya was far too miserable following her divorce, but her mother hated her for that. Instead of sympathy, अच्छा अब इसके ना डाइवोर्स की बात हो रही है कि मदर कितना परेशान है. तो फिर से पढ़ती हूँ. मदर डॉटर रिलेशनशिप एंड द जनरेशन गैप हैज़ ऑल्सो बीन स्ट्रेस्ड. इसमें बताया गया है मदर और डॉटर का रिलेशनशिप और जनरेशन गैप. प्रिया वॉज फार मोर मिजरेबल फॉलोइंग हर डाइवोर्स. मतलब डाइवोर्स से पहले तो उसकी कंडीशन और बुरी थी, बट हर मदर हेटेड हर फॉर दैट. मदर उसको हेट करती है कि उसने डाइवोर्स क्यों लिया. इंस्टेड ऑफ Instead of showing sympathy to her or support her, she hated Priya, maybe for her guts, maybe for her refusal to cross the traditional line and accept whatever destiny had in store for her. She was jobless too, and again her mother hated her for it actively and openly. Priya has to assure her mother that she doesn't need her pension, that she can fend for herself, मतलब support herself, she can support herself. वो ऐसा बोलती हैं. The only solution the mother can think of to pull Priya out of the mess and मतलब वो चाहती हैं कि प्रिया जो है इस मेस से निकल जाए. और सॉल्यूशन जो है वो क्या है? सेकेंड मैरिज है. If Priya will somehow agree to marry Dr. Kesavan, even at the age of 50, her economic hardship will end. And once married, she may
शी मे आउटग्रो हर पैशन फॉर राइटिंग. एक बार शादी हो जाए तो वो लिख सकती है. राइटिंग विच डजेंट फैच हर अ सिंगल पैसा बाय वे ऑफ रॉयल्टी. उसको कुछ नहीं मिलता उसको. For most of our women at least, marriage remains the only goal, the only worthwhile goal in a woman's life. इसलिए मैरिज करना जो है उसको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, ज़रूरी हो जाता है. ठीक है. Not only her mother, Priya might have herself like to get married and happily settled down in life. सिर्फ उसकी माँ ही नहीं, प्रिया भी चाहती है कि वो उसकी शादी हो जाए, है ना. आफ्टर हर डाइवोर्स years ago, when Kesavan had called her into his clinic, when he need not have and had given her an injection in her buttock because there was virus raging in the air, she thought मैं बहुत स्लो हो गई थी. she thought he was अबाउट टू मेक अ प्रपोजल. उसको लगा कि उसने उसको क्लिनिक में बुलाया तो उसको प्रपोज करेगा. एंड शी माइट इवन हैव एक्सेप्टेड इट. उसने एक्सेप्ट भी कर लेना था, बट ही डिडेंट. उसने कोई उसको प्रपोजल नहीं दिया. इवन टुडे एट 50 हर थॉट्स स्लिप टू Kesavan, and she admits that sex always lurks in some folds of her mind. Okay. Vying with writing for the possession of her. वाइंग मीन्स कम्पीट करना. मतलब एक दिमाग में उसके राइटिंग चल रहा है और दूसरा थॉट उसको जो है ये मैरिज का चल रहा है. वाइल वेटिंग फॉर द रिव्यू ऑफ हर लेटेस्ट बुक, शी फेल्ट हर सेल्फ गो वुमेन एंड वाइंडिंग लाइक अ मरमेड इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर Kesavan. वो चाहती है कि वो उससे उसको गले लगा ले, है ना, Kesavan को. मतलब उसके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही है क्योंकि उसको एंग्जाइटी भी है, उसको सपोर्ट चाहिए इमोशनली ना किसी का. शी वुड हैव एक्चुअली बेसिकली क्या है, उसको फाइनेंशियल एंड इमोशनल दोनों ही सपोर्ट उसको लेडी को चाहिए. शी वुड हैव लाइक टू रेस्ट हर हेड ऑन हिज चेस्ट एंड टेक द मेल कम्फर्ट शी हैड रिजेक्टेड ऑल दीज ईयर्स. शी विश्ड शी कुड टेक अ रेस्ट फ्रॉम द exacting tasks master of writing to which she had bound herself. वो सोचती है कि काश वो जो है ना एक रेस्ट ले पाती इन सब चीज़ों से. राइटिंग और आर्ट फॉर दैट मैटर कैन सप्लीमेंट लाइफ, इट कैन नॉट सब्सटीट्यूट इट. राइटिंग जो है ना वो आदमी की लाइफ में एक सप्लीमेंट का काम कर सकती है, थोड़ा बहुत सहारा हो सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से जो है ना उसको नहीं बदल सकते हैं. जैसे कि लाइफ नहीं चला सकता राइटिंग से आदमी की लाइफ नहीं चलती है. The theory thus depicts Priya as a woman writer, and as a writer go beyond all the pulls and pressures of sex in society. और जो मतलब वो ऐसी राइटर है जो कि बहुत आगे चली गई है इन सब चीज़ों से, सोसाइटी से, इन सब चीज़ों से. मतलब उसने अपने आप को इतना इंग्रॉस कर लिया है इन सब चीज़ों में. Now it is finished. In the next video we will do characterization, narrative techniques and letter sum up. Thank you so much.